Good morning, everyone. Any questions from what we discussed in the last class? Hello, am I audible? Hello. Hello, am I audible? Yes, morning. Harpreet, any questions? Okay, I take that as no question. So, हमारा कैश साइकिल तक कंप्लीट हो गया था. We start with liquidity ratios. Liquidity ratios helps you to understand the liquidity position of the company. Okay, it's primarily a short-term liquidity position. And what do you mean by liquidity? Liquidity means availability of cash plus ability to arrange cash. ये सब हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं. This is called as liquidity. Either you should have cash or I should be able to arrange the cash. Both would construe as liquidity. Both put together will construe as liquidity. Which means if I do not have cash in my pocket, but I have an ability to arrange cash in a very quick turnaround time, I can say that I have liquidity. Even I do not have cash in my pocket. Any doubt in this? Okay. So now, not able to manage short-term obligations. Short-term obligation means short-term dues, short-term payments. Same cheese. Under liquidity ratio, we have three ratios: current ratio, quick ratio, and cash ratio. We'll start with current ratio. So current ratio is current asset divided by current liability. Current assets आपको पता है क्या होते हैं? Assets which have a life of up to 1 year. Similarly, what is current liability? Payments which needs to be done within less than a year. Any question यहाँ तक before we go to forensic? Current asset, current liability, balance sheet से आता है. Less than 1 year, up to 1 year. ठीक है. So my current ratio current asset divided by current liability, or let's assume एक situation है 2/1.
एक सिचुएशन है 5/1, सिचुएशन है 10/1. A, B and C, सेम कंपनी है, 3 सिचुएशन. या छोड़िए इसको भी. एक 2/1 है और एक 0.5/1 है. So X and Y, पहले X and Y कंपेयर करते हैं. Between X and Y, which one is favorable situation for the manager? क्यों? Because in situation Y, company has to borrow and to pay out its liabilities. They are less on assets as compared to their liabilities. Company has to borrow. In case of Y. Yeah. So company has to pay 1 rupee in less than 1 year. So company in next 1 year, company has to pay 1 rupee, but company is expected to receive 0.5. Yani will be short of 0.5 for making the payments to its short-term liabilities. Okay. So why if the company in a situation like Y, then of course it's not a great indicator because company is likely to have problem or probably might default or probably might result in delay in payments which is due in less than 1 year because company को pay 1 रुपए करना है but आने वाला 0.5 है. कोई doubt है? Can we sorry, can we make the statements saying this only? Can we make this statement? Probably X can have borrowed the money and the current it will come into the current asset and the borrowing is in long-term liability. नहीं दोबारा बोलो. कंपनी X ने क्या किया? If you are borrowing any fund, it will go into your current assets, the liquid cash available to you, and you are borrowing it in a long-term. You are stating it as a long-term liability. नहीं, so अगर मैं लोन लिया आया उसको मैं करंट एसेट में इंक्लूड नहीं करूंगा. This ratio should, अगर मैं न्यूमरेटर में उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ. Sorry, I will not include in the numerator that cash portion. So let's assume if I've taken a loan for 10 years from a bank, what I understood from you, कि वो 10 year का मैंने आज लोन लिया तो मेरे करंट अकाउंट में वो क्रेडिट हो गया, बैंक ने डिस्पर्स कर दिया लोन. तो मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो आप बोल रहे हो कि जब मैं करंट एसेट कैलकुलेट करूंगा तो उसको भी न्यूमरेटर में मैंने ऐड कर दिया होगा. करेक्ट? Is that what you're saying? हाँ, so that is wrong. I will not include that in numerator. अगर मैं उसको न्यूमरेटर में ले रहा हूँ, ठीक है, तो उसको मैं डिनोमिनेटर में लूंगा बिकॉज वो जो कैश है मेरा करंट एसेट नहीं है, वो लॉन्ग टर्म एसेट है. वो मैं 10 व्हाट इज करंट एसेट? एन एसेट जो रिटायर हो जाएगा लेस देन 1 ईयर. अभी अगर मैंने बैंक से 10 साल का लोन लिया है तो 10 साल का लोन देखिए जो मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ 10 साल के लिए करने वाला हूँ, तो करंट एसेट कैसे हुआ? Though it might be available in a cash form, that does not mean it qualifies to be. It doesn't mean that you're borrowing it for investment for 10 years. You can use it for your paying your short-term liabilities also. Can be.
It doesn't. ऐसा होता नहीं है। आप यूज कर सकते, देखो आप बैंक के पास जाओ, आप किसी बैंक के पास जाओ कि मुझे लॉन्ग टर्म लोन दे दो फॉर पेमेंट ऑफ माई शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, आई डाउट कोई बैंक आपको आसानी से दे देगा। आप उसको पेमेंट यूज कर दो विदाउट टेलिंग द बैंक, या किसी तरीके से आप यूज कर लो, वो ठीक है, बट आप जब बैंक से लोन रेज करते हो तो आपको पर्पस डिफाइन करना पड़ता है। हाँ, आप शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, इसको शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लिमिट्स बोलते हैं या शॉर्ट टर्म यूज करके, तो वो डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा फिर तो। हाँ, बट आप बैंक को एक बोलो कि मुझे एक लॉन्ग टर्म लोन चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ माई शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, बैंक आपको प्रपोजल ही रिजेक्ट कर देगा। नहीं, बट इफ यू आर गेटिंग इट एंड इफ यू आर यूजिंग इट, थियोरेटिकल है ये, अगर आपको वैसा मिल रहा है तो भी आपको यूज नहीं करना चाहिए न्यूमरेटर में। नहीं करना चाहिए। If नहीं the करना company चाहिए। is using it, then we have to go it to see that what is the position of this long-term liability they have in the form of अगर borrowing. कंपनी यूज कर रही है ना, ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशियो, जो रेशियो को छोड़ो, वो वैसे ही रेड फ्लैग है, वो रेड फ्लैग है, which means that is a concern कि कंपनी से क्यों कर रही है। either there is some fraud or either there is something which company is trying to hide and company is trying to get away with it। ये तो ऑडिटर ही पकड़ लेगा सर, क्योंकि अगर बैंक को बताए बिना आपने उसको कहीं और रोल करा, that is technically against the company's act। सर ये रियल वर्ल्ड में होगा नहीं, बिकॉज रियल में जब बैंक आपको लोन देता है ना, बैंक उस लोन को मॉनिटर करता है कहाँ जा रहा है वो पैसा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो बैंक आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं डालता लॉन्ग टर्म लोन में। जैसे अगर जैसे आपको गाड़ी खरीदनी है तो बैंक आपके अकाउंट में पैसा नहीं देता, बैंक जो 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 जहां से आप कार खरीद रहे होते हैं उसके नाम का चेक इश्यू करता है। in the corporate world also, let's assume if I say I want to do an import, तो बैंक जनरली वो इम्पोर्टर के नाम पे पेमेंट रिलीज करता है। सो आई एम नॉट सेइंग सारे लोन्स ऐसे होते हैं जो गारंटी के फॉर्म में लोन रेज करे जाते हैं। हाँ, उसमें करंट अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, वो करंट अकाउंट पहले अपने पास खुलवाता है, सेम बैंक के पास करंट अकाउंट खुलता है मेरा, उसमें क्रेडिट होता है, वो मॉनिटर करता है वो फंड का यूटिलाइजेशन कहाँ जा रहा है। जो ईसीबी गाइडलाइंस है उसमें भी फंड यूटिलाइजेशन की मॉनिटरिंग होती है। सो in most of the loans, at least in the Indian markets, अगर आप एक लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं फ्रॉम अ टिपिकल ट्रेडिशनल बैंक जो आरबीआई के अंडर फॉल करता है, हाँ, अब आप किसी लोकल ये जो नॉन ऑर्गेनाइज्ड लेंडर्स होते हैं उनसे लोन ले रहे हो, तो वो तो आई थिंक एनीवेज आई थिंक आउटसाइड पर्व्यू ऑफ दिस डिस्कशन है, बिकॉज़ वो सारा इलीगल मार्केट में आता है। एनबीएफसी, सॉरी, एनबीएफसीज। हाँ, तो एनबीएफसी भी आपको लोन देगा तो मॉनिटर करेगा, ऐसे ही नहीं देगा कि आपको बोले कि हाँ, आप उसको बोलो मुझे लॉन्ग टर्म चाहिए फॉर बिल्डिंग समथिंग एंड उस पैसे को घुमा के कहीं और ले जाओ। ये पॉसिबल है, बट ये गलत चीज है, इलीगल है। अगर आप कर रहे हो तो वो गलत साइड पे है। My question is that 2/1 and 0.5/1, seeing this, can we conclude that aspect, or we have to see in that part also what we are discussing now? हाँ, प्रोवाइडेड कंपनी कुछ गलत नहीं कर रही है तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ। अगर कंपनी ऐसा कुछ गलत कर रही है तो मैं, if the balance sheet comes in, means the financials comes in front of you for the first time and you don't know the company, then probably you will see this aspect also, not? हाँ, अगर एक लॉन्ग टर्म, देखो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दिख रही है मुझे बैलेंस शीट में और उसका मुझे कॉरस्पॉन्डिंग एसेट क्रिएशन नहीं दिख रहा कहीं पे भी, ठीक है, सो लेट्स अज्यूम मुझे लायबिलिटी साइड में दिख रहा है बैंक का लोन है 10 ईयर का, उस लोन के कॉरस्पॉन्डिंग कोई प्लांट मशीनरी नहीं दिख रहा, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं दिख रहा, कोई फिक्स एसेट मुझे क्रिएशन नहीं दिखा, मैं पूछूंगा कंपनी से भाई ये लोन लिया था इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे किया, वो बोलेंगे नहीं अभी यूटिलाइज नहीं किया, कैश अकाउंट में पड़ा हुआ, यूज करना बाकी है अभी, तो ठीक है मैं उसको न्यूमरेटर से हटा दूं।
अगर मुझे कंपनी बोलती है मैंने ये लॉन्ग टर्म लोन लिया है और ये फंड्स पड़े हुए और इसको मैं शॉर्ट टर्म में पेमेंट यूज करने वाला हूँ, अगर कंपनी मुझे ऐसा बोलती है और बोलती है कि इस रेशियो में इंक्लूड कर लो, माय क्वेश्चन टू देम इज, rather than a question, my challenge to them would be, has this been agreed by your auditor? On what basis you are doing this? Is your bank aware of this? ये दो क्वेश्चन पूछूंगा मैं उसको. 99.99% वो इस क्वेश्चन में फेल करेगा. And audited balance sheet में if they are doing that, then you have to see that's SWOT analysis that should be shown by the auditors and all that. In that, हाँ, कहीं ना कहीं वो फिर ऑडिटर उसको क्वालिफाई करेगा, और ऑडिटर से ज्यादा मुझे तो बैंक पे वो है कि बैंक उसको एग्रीमेंट किया है कि नहीं किया. ये बैंक की कंकरेंस में होना चाहिए अगर होना चाहिए तो. एंड नो बैंक आई थिंक will allow this. बैंक ये बोलता है तेरे को पैसे की जरूरत है, तू मुझसे शॉर्ट टर्म लोन ले ले और शॉर्ट टर्म पेमेंट कर दे, तेरा क्रेडिट अच्छा है, मार्केट में योर क्रेडिबिलिटी इज गुड, सो आई हैव नो इश्यूज टू गिव यू अ शॉर्ट टर्म लोन. तो वो हो सकता है. बट लॉन्ग टर्म लोन लेके शॉर्ट टर्म पेमेंट कर देगा तो उसको जो बैंक है जो लोन दे रहा है वो फिर पैसा रिकवर ही नहीं कर पाएगा, डिफॉल्ट कर जाएगा कस्टमर. okay. And in case of mortgage lending taken from bank, then it will directly come to their account. वो भी डिपेंड करता है कि किस तरह का लोन है, क्या क्या कैटेगरी ऑफ लोन है. सो इन द लेंडिंग साइड the RBI has defined lot of provisions in terms of क्यों लोन देना है, किस पर्पस के लिए देना है, ठीक है. वो बहुत सारी चीजें हैं. तो हर सिनेरियो में आरबीआई ने डिफाइन किया हुआ है कि जो लोन का पैसा है वो बोरोअर के अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंडिया में मॉर्गेज लोन्स है, होम लोन्स का, उसमें इट्स प्रीटी क्लियर कि आप जो बोरोअर है उसके अकाउंट को पैसा हिट नहीं कर सकता, ठीक है. वो बिल्डर के या जो ओरिजिनल सेलर है उसी के अकाउंट में जाएगा पैसा, बैंक अकाउंट से. मतलब जो बैंक लोन दे रहा है इसलिए वो बिल्डर के या प्रॉपर्टी जो सेलर होता है उसी के नाम पे रिलीज होता है आरटीजीएस या एनईएफटी जो भी आप करवाते हैं, ठीक है. फिर ईसीबी गाइडलाइंस में भी सेम है, ठीक है. ओनली आई थिंक व्हाट आई कैन रिकलेक्ट फ्रॉम, जहाँ पे आप पर्सनल गारंटी रेज करवा के फंडिंग रेज करा रहे हैं, ठीक है, जनरली वो आपके करंट अकाउंट को क्रेडिट करने देते हैं, बट वो अमाउंट्स बहुत बड़े नहीं होते जनरली. और उसकी फिर मॉनिटरिंग भी होती है, कहाँ पे यूटिलाइज, उसकी क्वार्टरली बेसिस पे रिपोर्ट देनी पड़ती है, बहुत सारा मॉनिटरिंग होता है. सो है थोड़ा सा ट्राई अंडरस्टैंड फ्रॉम अ रेगुलेटर पर्सपेक्टिव. अदरवाइज तो पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है वो विल गो इनटू क्राइसिस, करेक्ट. कि आप एक कॉर्पोरेट हो, आप मेरे पास आते हो और मैं एक बैंक हूँ, आप मुझे बोलते हो निशांत गिव मी लोन, आई वांट टू एक्सपैंड माय बिजनेस, गिव लोन टू मी फॉर 5 years. मैंने कहा ठीक है, मैंने आपको पैसा दे दिया और उस पैसे को आपने मुझे बोला कुछ और, करना कुछ और शुरू कर दिया. 5 साल के बाद तो आप डिफॉल्ट ही कर जाओगे. तो आई एज अ रेगुलेटर, सॉरी somebody as a regulator, which is RBI in this case, sitting at the top, if they want to bring stability and reliability in this banking system in Indian economy, they will tell me as a bank कि बॉस ये जो सिद्धार्थ को पैसा दे रहे हो, सॉरी दीपक को जो पैसा दे रहे हो, उसको मॉनिटर करो कि किसके लिए यूज कर रहा है. अगर वो दीपक अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कर रहा है तो ठीक है, बिकॉज then he's using the money in line with what he mentioned at the time of submitting the proposal. But if he's using the money for something else, then don't allow him या escalate या whatever should be done. आप भी सेम ऐसे ही होता है जैसे अगर आप इफ यू टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर होम फॉर परचेज ऑफ हाउस, आप बोलो बैंक को वो पैसा मैंने गाड़ी खरीदने में यूज कर दिया, वो अलाउ नहीं करेगा उसको. जिस पर्पस के लिए आपने रेज किया उसी पर्पस के लिए यूज होगा. अगर आपका पर्पस चेंज होगा वो पैसा वापस देना पड़ता है, नया लोन इश्यू होता है नए पर्पस के साथ और फिर यूटिलाइज होता है. एनी डाउट दीपक यहाँ तक? No. Okay, move.
So between X and Y, is this clear to everyone that X is what is a better position vis-a-vis Y? Because अगर मैं X पे हूँ, so it means yes, I am in a better position to pay my short-term liabilities vis-a-vis situation Y. ठीक है? Now let's come to ABC. हाँ जी, एक और डाल देते हैं 1 by 1. हाँ जी, between A, B, C, D. 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 D is what you as a management would want. Favorable, yes. अच्छा, चलिए. So Parul has opted for D. बाकी लोग? डी सर, क्यों? क्योंकि सर हमारा मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से जितना एसेट है हम उतना लायबिलिटी पे कर रहे हैं. ज्यादा हमें एसेट से आने का ये क्या कहते हैं उसे, एसेट से इनकम आने नहीं चाहिए. बट आपने तो पढ़ा होगा कि आइडियल रेशियो इज 2:1 फॉर करंट लायबिलिटी फॉर करंट रेशियो. वो कॉन्सेप्ट कहाँ गया पारुल? नहीं पढ़ा नहीं, था अभी तुमने आपने? दोबारा मतलब था, बट अभी दोबारा जैसे वी हैव आई स्टडीड, तो उससे आई रियलाइज्ड कि द आइडियल रेशियो should be 1 or slightly more than 1, between 1.3, but 2:1 is also like the money getting wasted. Wasted? Like the company is not investing it somewhere else. Okay. So ठीक 1 है, is to 1 is ठीक है. बाकी लोग? So I've got 2 responses, both has opted for D. बाकी लोग? We're discussing from the management side, for the company's management. And you go ahead. In this case, why not C? If we have gone for with X and Y, You go with C and give your logic. your logic is that मैंने तो अभी बोला ही नहीं है, मैंने कुछ देखो, नहीं, मैंने X और Y X में और Y के अगर कंपैरेटिव में जा रहे हैं, then इस करंट एसेट इज योर आपका अकाउंट रिसीवेबल भी आता है, करंट लायबिलिटीज, अकाउंट पेएबल, योर ग्रॉस मार्जिन कुड हैव बीन हायर, दैट्स व्हाई योर एसेट क्लासेस ऑफ कुड हैव बीन गुड. हाँ ठीक है. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अभी 2-3 लोगों ने डी चूज किया है. इफ by virtue of any logic, if you believe C is better, go ahead and tell me the logic कि C better है. I have already told the logic for that. अब C opt कर रहे, correct? Yes. ठीक है. बाकी लोग? So you've got D, you've got C now. बाकी लोग? Any other thought? Anybody for A or B? I think sir A is better. A is better. और क्यों कृतिका A is better?
because in case company has some any मतलब कोई इमरजेंसी लाइबिलिटी जैसे क्रिएट हो जाती है तो थोड़ा एक्स्ट्रा फंड्स है कंपनी के पास पे करने के लिए। ओके, और आपने एक्स्ट्रा फंड्स कैसे क्वालिफाई किया कि वो 2:1 ही एक्स्ट्रा अच्छा होना चाहिए, 5:1 एक्स्ट्रा अच्छा क्यों नहीं है, 10:1 एक्स्ट्रा अच्छा क्यों? मतलब 5 and 10 इज लाइक एडिशनल, बहुत ज्यादा फंड्स कंपनी के पास वो वैकेंट पड़े रहेंगे, मतलब यूटिलाइज नहीं कर रही है कंपनी। तो वो 1 से 2 भी तो एक्स्ट्रा ही रख रही है ना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू क्रिस्टलाइज 2:1 इज अ गुड वन, why it is not 1.5, why it's not 1.3, why it's not 1.1. I'm just trying to understand वो कट ऑफ कैसे मारा आपने? Among these 4 scenarios I am saying, sir. हाँ, सो जैसे अभी जैसे आई थिंक पारुल ने बोला था कि 1 और 1 से थोड़ा सा 1.3 टाइप्स उसने आई थिंक बोला था। सो अगर मतलब मैं I also feel अगर that it should be 1.3 greater than 1. Current asset should be greater than 1. अच्छा, तो अगर 1.1 अपॉन 1 होता तो बिटवीन दिस एंड 2/1 आप कौन सा चूज करते? 2/1, sir. That's again that's what I wanted to know कि आप 2/1 पे क्यों हैं? I don't know. I feel that additional company के पास cash होना चाहिए in which is case. which is correct. I'm just trying to understand वो ideal cash होना चाहिए, तो उस logic से why we are not moving toward B and C? देखो मैं आप लोग को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जैसे जो कृतिका ने बोला कि 2/1, ठीक है, if she comes, if she ever gives me this response in an interview, ठीक है, तो यही this is what I will ask back again कि अगर आपने 2/1 बोला है और जो लॉजिक उसने चूज किया अभी ये ज्यादा होना चाहिए, तो उस लॉजिक से तो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, एंड which means that logic you should be standing on C, ठीक है। अब मैं आपको ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो अभी के लिए मान के चलते हैं कृतिका का आंसर सही है, लेट्स अज्यूम मैं आपको आंसर ए ही देने वाला हूँ, अभी के लिए मान के चलो, तो कृतिका हैज गिवन मी राइट आंसर, बट जो उसका लॉजिक है वो लॉजिक बहुत वीक साउंड कर रहा है एंड शी इज नॉट एबल टू डिफेंड दैट लॉजिक। सो मैं जो फ्रॉम स्कोरिंग शीट होगी मैं उसको कृतिका को 0 ही दूंगा इस क्वेश्चन के आंसर पे, दो शी हैज ऑप्टेड फॉर राइट आंसर, बिकॉज द वे वी वुड असेस, मैं सिर्फ आंसर का राइट आंसर पिक किया कि नहीं किया, राइट ऑप्शन चूज किया कि नहीं किया, उस पे मार्क्स नहीं दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू कन्विंस मी ऑन द लॉजिक piece on in terms of how you have got to that point. ये प्लीज बहुत ध्यान रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। I've seen a lot of candidates who give me the right answer, but they struggle to defend that right answer, to struggle to get to explain the logic of that right answer, which in turn doesn't help them because they continue to stand at, from a scoring perspective, continue to stand at 0. Anji. So we've got D, we've got A now, we've got C as well. Last time, anybody else, any other view on this? Want to add anything जो अभी thoughts आए हैं? Sanjeev, what's your view? I think A, sir. A. क्यों A? सर डिफाइन नहीं कर पाऊंगा सर एग्जैक्टली, क्योंकि वो मुझे वर्ड समझ में नहीं आता कैसे बोलना है, क्योंकि मैं सर वो मुझे लगता है कि लाइबिलिटी और ये एसेट सीआर निकालना है ना सर। हेलो सर, सीआर रेशियो पूछ रहे हैं ना आप, करंट रेशियो के लिए कौन सा पॉइंट अच्छा है चौथा में 4 में से, यही ना? हाँ, जो भी हम कर रहे हैं वही पूछ रहा हूँ सर। तो कंपनी का जो एसेट है ना सर,
उसके अगेंस्ट में लायबिलिटी आधा है, मतलब अगर पे करने का वो सिचुएशन आएगा तो बेटर होगा ना सर ये। चलिए ठीक है। सर मेरा भी तो होता है। ठीक है चलिए, लेट मी टेक दिस नाउ। नाउ मैंने वाई क्यों रूल आउट किया पहले वो समझो। वाई मैंने इसलिए रूल आउट किया, एज ए मैनेजमेंट मैं वाई में खुश हूं, बट अगर मैं वाई मेंटेन करता हूं तो जो मेरे लेंडर्स होंगे वो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, मेरे जो क्रेडिटर्स होंगे मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हेंस एज ए मैनेजमेंट मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी मार्केट से क्रेडिट परचेज करने में अगर मैं वाई रेशियो मेंटेन करता हूं तो। ठीक है, I am okay with why as a management, but I will face some other consequence issues when I do and operate in the market. Hence, I want to avoid those difficult conversations from my suppliers, and hence I prefer not to operate at Y, and hence I prefer to move away from Y to X or Y to D. वो भी हम discuss करते हैं. But definitely Y is what not is ideal to operate. ठीक है, that's why Y is being ruled out. यहाँ तक कोई doubt? Now, between D to C, from D to C, जो आपका न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, द इम्पैक्ट इज कि बिटवीन D to C, C में आप ज्यादा फंड्स ब्लॉक कर रखा है आपने करंट एसेट्स में। और कंपनी ने अगर, ये कंपनी का कंसिस्टेंट रेशियो है, 10/1, 10/1, 10/1, नॉट फॉर अ शॉर्ट टर्म, विच मीन्स लॉन्ग रन में लास्ट 2-3 साल में कंपनी का यही ट्रेंड पैटर्न है, एवरेज 10/1 करंट रेशियो मेंटेन करते हैं। सो व्हाट आर वी सेइंग, दैट कंपनी हैज invested or blocked too much in the current asset, उसको जरूरत है कि नहीं है, that is the question. Now then the question that we need to understand, is the company wasting any opportunity? If the answer is yes, then this ratio is not good. यानी अगर कंपनी ये न्यूमरेटर में करंट एसेट में जो 10 रुपीज इन्वेस्ट करके बैठी है या ब्लॉक करके बैठी है, this is at the cost of some other opportunity, तो ये प्रॉब्लम है, because then you've missed that opportunity. पर लेट्स से मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, जैसे कोविड जैसा सिनेरियो चल रहा था अभी या चल रहा है अभी, ठीक है, अब कंपनी हैज नो अपॉर्चुनिटी, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट ऑन द एक्सपेंशन साइड राइट नाउ, एंड हेंस you're maintaining the balances in your in or you're keeping your investment in your current asset rather than investing back into the long term growth of the company, then this makes sense from a strategy perspective. And that's why I said it will be a short term or a temporary phase, correct? Could be for a year, could be for 6 months or a quarter, but not will turn out to be for 2 to 3 year average. So जो C है वो ideally will get ruled out because of this reason. मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रख रहा हूँ फॉर लॉन्ग रन, देन डज दैट मीन मैं कोई अपॉर्चुनिटी लूज कर रहा हूँ? इफ यस, देन वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो रिटर्न है वो मेरी हिट है, वो मैं सेक्रीफाइस कर दिया फॉर मेंटेनिंग अ वेरी हाई कैश और फॉर कीपिंग हाई इन्वेस्टमेंट्स इन माय करंट एसेट। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? सो सी गेट्स रूल्ड आउट नाउ। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? ठीक है, उसी लॉजिक में बी गेट्स रूल्ड आउट। ठीक है, now the complicated question is between D and A. ठीक है, listen this carefully now.
what we do, we look at the nature of the denominator first. कि nature of denominator क्या है? अगर nature of denominator ऐसा है कि which does not create too much of impact, so which means let's assume आपका एक पुराना वेंडर है या पुराना सप्लायर है, आपने उससे क्रेडिट पे परचेज करके रखा है और आपका रिलेशनशिप उससे इतना पुराना और इतना अच्छा है कि लेट्स अज्यूम अगर पेमेंट करनी है उसको किसी ड्यू डेट पे नेक्स्ट 6 मंथ्स और अगर थोड़ा बहुत डिले हुआ 15-20 दिन 1 महीने का डिले हुआ तो वो मैनेज हो जाता है. इट डजंट क्रिएट एनी रेपुटेशन इम्पैक्ट, इट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल कॉन्सिक्वेंस, ऐसा कुछ नहीं होता. तो मैं विच मीन्स मेरा जो करंट लायबिलिटी है वो उसको हम सॉफ्ट करंट लायबिलिटी बोलते हैं. सॉफ्ट मीन्स कि अगर थोड़ा बहुत डेट में आगे पीछे हुआ, ठीक है, so that person will accommodate because of the relationship that we have or been running with that creditor in the past. That creditor will accommodate. neither वो मेरे मार्केट में जाकर रेपुटेशन खराब करेगा, neither मेरा उससे फ्यूचर में परचेज खराब होगा, neither वो मेरे अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लेगा. तो अगर उस तरह की मेरी मेजॉरिटी ऑफ करंट लायबिलिटीज हैं या सारी करंट लायबिलिटीज मेरी वैसी ही है तो मैं डी पे खुश हूं 1 by 1 पे. What does that mean? अगर मैं 1 by 1 रखता हूं, that is good enough to pay my शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज. और अगर मेरी किसी फ्लक्चुएशन की वजह से, किसी इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से मेरा कुछ शॉर्टेज आ भी गया तो वो शॉर्टेज को मैं अपने क्रेडिटर से मैनेज कर सकता हूँ, अकोमोडेट कर सकता हूँ. एंड मुझे डी 1 by 1 की जगह 2 by 1 मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड वो एक्स्ट्रा 1 रुपी इन द करंट एसेट के लिए मेरे पास कोई एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है. बट केस 2, लेट्स अज्यूम माय क्रेडिटर्स में ऐसे क्रेडिटर्स हैं जो बहुत हार्ड क्रेडिटर्स होते हैं. नीचे हार्ड क्रेडिटर्स मींस कि अगर आपने एक दिन की पेमेंट डिले कर दी तो वो इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे आप पे, आपके अगेंस्ट मार्केट में रेपुटेशन खराब हो सकती है, आपको फ्यूचर में उनसे परचेज करने में प्रॉब्लम होगी, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा. दे माइट सेंड यू लीगल नोटिस की पेमेंट नहीं हुआ, इस दिन का ड्यू था आपका, समथिंग लाइक दिस. सो देन if your creditors are like those, then it's better you operate little more than one. अब little more than one के आगे मैं बताऊंगा, but I will stop here and see in case आपको यहाँ तक कोई डाउट या क्वेरीज है. You told the opportunity cost. Will it not be how to go about that? That's 5:1 or 2:1 or 1:1. Then can we conclude from this that without knowing that what is the opportunity cost we have lost if we are having a high current asset and we are not investing in that? Seeing this 1 by 1, 2 by 1, 5 by 1, 10 by 1, we can we conclude? हम ये इससे कंक्लूड नहीं करेंगे कि अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास थी या नहीं थी. वो तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडस्ट्री, understanding of the economy, and probably we can have much more discussion with the management in terms of what's again you have to, without prior to going to the management, you have to see the peer group, what's there. No, I'm not saying we need to analyze the peer group. What I'm saying कि मुझे उस इंडस्ट्री की इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग होगी जहां से मुझे सेंस मिलेगा एक मैक्रो पर्सपेक्टिव में कि उस इकोनॉमी प्लस उस सेक्टर या इंडस्ट्री में अभी या जिस पीरियड का हम लोग कर रहे हैं एनालिसिस, उस पीरियड में फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव क्या पैटर्न चल रहा था. ठीक है, अगर मुझे पता है कि वहां पे प्रॉब्लम है एंड द प्रॉब्लम इज मोर ऑफ मैक्रो इन नेचर, बी इट एन इंडस्ट्री स्पेसिफिक, बी इट एन इकोनॉमी स्पेसिफिक, ठीक है, सो दैट गिव्स मी सम कंफर्ट कि हाँ ये रेशियो is not a strategic ratio, but is this ratio on the higher side, let's assume 10 by 1 or 5 by 1, is because there is no opportunity in that sector available. और मेरे को उस रेशियो के पैटर्न से भी देखने को मिलेगा. लेट्स अज्यूम कंपनी का जो हिस्टोरिकल 4 साल 5 साल 6 साल पुराना रेशियो है, कंपनी यूज्ड टू ऑपरेट एट 2 by 1 2 by 1, बट लास्ट 1-1.5 साल से कंपनी 5 by 1 7 by 1 के लेवल पे ऑपरेट कर रही है. सो
It means कि company पहले generally used to operate at a lower current ratio, which means by 1/1, 2/1, whatever we conclude, but definitely not at 5/1 or 10/1. But last 1.5 years से या last 4 quarters से last 2 quarters से companies being operating in this, and I know उस industry में या उस economy में अभी because of some reasons growth के ऊपर impact आए हुए हैं. So that gives me that helps you to connect these dots, correct? Without looking at the peer. हाँ, अब आपको peers को भी देखना है, आप peers को भी देख लो. अगर peers से भी आपको same चीज आती है, well and good. आप management से पूछते हो, management gives you the same logic and feed. That also helps you connect these dots. And this high ratio should be consistent for a long period of 2 or 3 years. Balance sheet, we are seeing the same ratio. Then only we can conclude that they are. Then we can have to look at what the perspective, why they are putting very high thoughts on this current asset, not investing in future. Yeah. For अगर एक क्वार्टर के लिए ऊपर नीचे हो गया तो मैं इतना ज्यादा बॉदर नहीं करूंगा. But at least if I see at least for a period of 1 to 2 years. I think a year also. हाँ, तो वही मैंने बोला ना, for at least for a trend of 1 to 2 year at least उतना अगर मुझे दिखता है हायर साइड पे, then I will start asking further question. उससे कम में इससे कम में था बट फिर वापस नॉर्मल आ गया है, तो yes, that is very much possible, correct? हाँ जी, कोई डाउट क्या है तो? Great. Now the most important question कि 1/1 होना चाहिए, 1.1 होना चाहिए, 2/1 होना चाहिए, 1.5 होना चाहिए. Any idea, any thoughts कैसे डिसाइड करती हो कि कंपनी या कैसे करना चाहिए? Nobody have challenged anybody in the past, your teachers or your tutors, जिन्होंने भी बोला ideal ratio is 2/1 और आपने उसको absorb कर लिया and living with this for years, for ages. Nobody has ever tried to understand what 2/1 logic क्यों आया, कहाँ से आया, and why 2/1 is good, then why 1.5/1 is not good. Hello. Yeah. आवाज क्लियर नहीं आ रहा है. अब आ रहा है? हेलो हेलो इतना क्लियर नहीं है. हेलो निशांत सर, हाँ बोलो. मैं ऑडिबल? हाँ बोलो. I'm saying, sir, I don't understand. Can you once again repeat all the scenario? Because today I read the सुबह आपका आवाज नहीं क्लियर आ रहा, बट आई थिंक what I could gather is आप खुद बोल रहे हो कि कुछ पार्ट आपका मिस हुआ है शायद. yes. I'm saying some part of the missing today, so it can possible to repeat in this situation, present moment. तो आप रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना, बिकॉज आई डोंट नो आपका कहाँ से मिस हुआ है. ठीक है, सो पूरा स्टार्टिंग से मिस हुआ है, आपका कोई बीच में पैच मिस हुआ है, कोई आपका स्टार्टिंग से मिस हुआ था, बट इस राइट नाउ जो सिचुएशन है प्रेजेंट मूवमेंट में हूँ, अवेलेबल जो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का सिचुएशन, इस सिनेरियो कैन ये आप एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या? इट कैन पॉसिबल. हमने करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी तो डिस्कस ही नहीं किया सुभाष. अभी यहाँ पे लिखा है ना, कहाँ लिखा है? यहाँ पे सर, यहाँ पे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी एंड वन कहाँ लिखा है? यहाँ पे सर कहाँ लिखा है? फ्रंट में लिखा हुआ है सर, करंट CA माइनस CL एंड ABC एंड 1:1. वो डिवाइडेड है. डिवाइडेड की बात कर रहे हो? अरे तुम माइनस बोल रहे हो, डिवाइड बोल रहे हो? डिवाइड की बात कर रहा हूँ. अभी तो माइनस बोल रहे थे आप. नहीं, माइनस नहीं बोला मैंने, माइनस कभी बोला ही नहीं. अच्छा चलो ठीक है, माइनस नहीं बोला. तो आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, बिकॉज आपका आवाज भी इतना क्लियर नहीं आ रहा है. ठीक है, सो मुझे माइनस सुनाई दिया, फजलूर को भी माइनस सुनाई दिया, इसलिए उसने डिवाइड बोला.
ठीक है, आप एक बार रिकॉर्डिंग देखना, कुछ डाउट हो तो कल पूछना सुभाष। ठीक है, चलेगा। And so I will come back to my original question. So between D and A, how do you decide where should you stop? 1 by 1, 2 by 1, 1.5 by 1, 2.5 by 1. Anji, any thoughts on this? कभी किसी ने किसी से पूछा हो, कभी किसी ने पढ़ने की कोशिश करी हो? %99% of the candidates that I've seen, including the candidates from very, very good B schools, okay, fail to answer this. Some of the CFA candidates fail to answer this. Andy, last time, anybody on this? Any thoughts on this? चलिए, ठीक है, अगर नहीं, so what we do, we calculate two components. Okay, first is the probability. थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा आई थिंक स्टैटिस्टिकल टर्म्स में नहीं समझा था, आपको सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ. सो हाँ, क्वालिटी of my current assets and impact of delay. ये दो वेरिएबल कंपोनेंट्स हम लोग क्रिएट करते हैं. So what does this mean? ठीक है, इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में अगर मुझे करना चाहे तो अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस भी कर सकते हैं. जी, ये जो दो पॉइंट्स मैंने येलो में हाईलाइट करेंगे, देख लीजिए एक बार. Quality of current asset and uncertainty in business and impact of delay for payment and current liabilities. मैं सेकेंड पॉइंट समझा रहा हूं. मैं सेकेंड पॉइंट वही जो मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर मेरे करंट लायबिलिटीज ऐसी हैं जो काइंड ऑफ सॉफ्ट करंट लायबिलिटीज है कि अगर मैंने थोड़ा डिले कर दिया, इट विल नॉट क्रिएट टू मच ऑफ इम्पैक्ट फॉर मी, विच मीन्स मुझे ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है वो करंट लायबिलिटीज के लिए. मुझे पता है कि चलो ठीक है, मैंने आज पेमेंट नहीं किया, कल करूंगा या 2 दिन के बाद कर दूंगा. ठीक है, सो वी रन दैट बिजनेस रिलेशनशिप because we've been dealing with this supplier or vendor for ages, so it's not a problem. Okay, so I'm okay to operate and 1 by 1 क्योंकि मुझे पता है कि अगर न्यूमरेटर में छोटा मोटा ऊपर नीचे डिफॉल्ट हो भी गया तो जो डिनोमिनेटर है वो बहुत बड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा. ठीक है, कोई डाउट यहां तक? एनी क्वेश्चन ऑन पॉइंट 2 before I go to point 1? ठीक है ना, पॉइंट 1, अगर मुझे अपनी करंट एसेट्स पे बहुत कॉन्फिडेंस है, करंट एसेट में बहुत कॉन्फिडेंस का मेजर कंपोनेंट डेटर्स होता है. मुझे पता है मेरे डेटर्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं. अच्छी क्वालिटी का मतलब वो बेड डेट नहीं होते, डिफॉल्ट नहीं होते, पेमेंट करते हैं और टाइम पे पेमेंट करते हैं. यानी मेरा करंट एसेट 1 रुपी है और मुझे 1 रुपी के पास्ट, लुकिंग एट द पास्ट ट्रेंड एंड माय एक्सपीरियंस ऑफ द बिजनेस, मुझे पता है कि मेरे 1 रुपी के जो करंट एसेट होते हैं
वो टाइम पे पेमेंट करते हैं और हमेशा फुल पेमेंट करते हैं, विच मीन्स अगर मुझे 1 रुपए का करंट लाइबिलिटी पे करना है तो मुझे पता है मेरा जो करंट एसेट है, जो डेटर है, वहां से मुझे पेमेंट आ जाएगा और टाइम पे आ जाएगा, तो मुझे एक्स्ट्रा 2/1 5/1 बना के रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे पता है इनसे हमेशा आता है, टाइम पे आता है, विच इज गुड इनफ टू पे माई करंट लाइबिलिटी। मान लो रेयरेस्ट ऑफ सिनेरियो में अगर डिफॉल्ट हुआ भी या कोई डिले हुआ फ्रॉम माई करंट एसेट, तो मेरा करंट लाइबिलिटी तो वैसे भी सॉफ्ट करंट लाइबिलिटी, वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। इट इज ओके टू ऑपरेट एट 1/1 एज अ मैनेजमेंट। We put together, this is the way we conclude 1/1 is a good ratio or not. ठीक है, I will pause here, absorb कर लो, कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ जी, any question on this? Now let's assume मैं जो हिस्टोरिकल पैटर्न देख रहा हूँ, मुझे वहां पता लगता है जो मेरे डेटर्स हैं वहां से मुझे रिकवरी ऑन एवरेज 80% ही होती है, यानी ऑन एन एवरेज 20% बैड चले जाते हैं, या बैड मतलब मैं ये नहीं कह रहा डिफॉल्ट कर जाते हैं, 20% के आसपास जो है उनसे पेमेंट रिकवरी में बहुत एफर्ट मारना पड़ता है, वो डिले करते रहते हैं, फॉलोअप करना पड़ता है, कुछ पेमेंट थोड़ी डिफॉल्ट भी हो जाती है, मतलब 80% इज वेरी वेरी गुड डेटा, हमेशा टाइम पे फुल पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट दिस, नाउ आई कांट, और मेरे जो क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, उसमें वो काइंड ऑफ एन हार्ड क्रेडिटर्स हैं, मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। नाउ आई कांट ऑपरेट बाय 1/1 लेवल, सॉरी, नाउ आई कांट ऑपरेट एट 1/1। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये जो 1 है, ये मुझे 1 का कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा, ये मुझे सिर्फ 0.8 का ही कॉन्फिडेंस देता है। तो ये जो 80 पैसा मुझे आने वाला है कंफर्ट के हिसाब से, क्योंकि बाकी 20 पैसा तो डिले होगा या प्रॉब्लम में जाएगा, ये 80 पैसा मेरे को, ये जो 1 रुपए की करंट लायबिलिटी खड़ी और जो हार्ड है, वो मैनेज करने डिफिकल्ट हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं न्यूमरेटर में ऐसा नंबर चूज करूंगा जिसका 80% एटलीस्ट मेरी करंट लायबिलिटी को कवर करे। समझ आ गया? दिस इज द वे वी डिसाइड कि जो न्यूमरेटर में 1 पे रुकना चाहिए, 1/5 पे रुकना चाहिए, सॉरी 1.5 पे रुकना चाहिए, 2 पे रुकना चाहिए, 5/1 पे रुकना चाहिए, या 10/1 पे रुकना चाहिए। ये मैथमेटिकल आपका लॉजिक एंड साइंटिफिक कैलकुलेशन है, जिसके थ्रू हम इस करंट रेशियो को फ्रीज करते हैं। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? So with this, we are concluding A is good. No, I never said that A is good. I said as a management, I would start with D, and I would like to be a D, unless when then I will look at the parameters of 1 and 2, and then probably I will decide, okay, कि मेरे को 1/1 पे रुकना चाहिए, या मुझे 1.2/1 पे रुकना चाहिए, या मुझे 1.5/1 पे रुकना चाहिए, या मुझे इनमें से कोई सिचुएशन चाहिए। बट जो
जो हिस्टोरिकल थॉट है, जो 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 बुकिश थॉट है कि आइडियल रेशियो फॉर अ करंट रेशियो शुड बी 2:1, वो मैं एक्नॉलेज नहीं कर रहा. वो 2:1 तब मेरे लिए अच्छा होगा जब मेरा ये गुड क्वालिटी ऑफ डेटर्स है 50% रेशियो, 50% आंसर आ जाता है. अगर मेरी गुड क्वालिटी ऑफ डेटर्स 50% आ जाता है, again we have to see that asset quality of assets. yes, अब मेरा क्वालिटी ऑफ एसेट पास 10-50% है, तो यानी ऑन एन एवरेज 100 रुपए में से 50 रुपए अच्छे डेटर्स हैं, बाकी टाइम पास हैं. टाइम पास मतलब परेशान करते हैं, एफर्ट करते हैं, डिले करते हैं, रुलाते हैं, बहुत सारा फॉलो अप कराते हैं, समथिंग ऑफ दोज कैटेगरीज है. तो और मेरे क्रेडिटर्स हार्ड है, तो मैं 2/1 पे ऑपरेट करूंगा कि चलो 2 रुपए का करंट एसेट है तो उसमें से 50% तो टाइम पे रिकवरी हो जाएगी, विच इज गुड इनफ टू पे माई क्रेडिटर्स, तो ठीक है मैं 2/1 पे ऑपरेट कर लूंगा. पर अगर ये मेरा 80% है तो मैं 2/1 पे ऑपरेट नहीं करूंगा, मैं 2/1 से नीचे रहूंगा. And in case you are a debt and it means you are not listed and you are debt free company, then what will be the alarming ratio that now we have to think? डेट फ्री कंपनी, वो तो अभी हम सॉल्वेंसी रेशियो में जब जाएंगे वो करेंगे. सो ये तो वेदर यू हैव अ डेट वेदर यू डू नॉट हैव अ डेट, इस रेशियो तो डेट का कोई लेना देना नहीं है, करेक्ट? बिकॉज ये तो शॉर्ट टर्म साइड पे देख रहे हैं. Because they don't have, in the sense they don't have the financial creditors. They are a crash rich company, but at certain point of time they have to look out. This should be the alarming. Below that, we have to stop the payments or for the creditors, and you have to your debtors. You have to focus on debtors to maintain that ratio and all. नहीं, मैं नहीं समझा. could you repeat this again? क्या सिचुएशन एग्जांपल दे रहे हो? They don't have any debt, means financial creditors. नहीं, दो अलग-अलग चीजें हैं. दो अलग चीजें. क्रेडिटर्स बोल रहे हो कि मैंने लोन नहीं लिया, दो अलग-अलग चीजें. Only financial creditors. That's why I'm saying. Long term loan, correct? ठीक है. Long as well as the short term loans they don't have. So आप बोल रहे हो जो भी वो परचेज करते हैं अपने सप्लायर से सब कैश परचेज करते हैं? नहीं, probably they are maintaining that liquidity. अगर आप बोल रहे हो कि शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स भी नहीं है, दैट कुड ओनली हैपन इन वन सिचुएशन कि मैं जो भी परचेज करता हूँ सारी कैश परचेज करता हूँ. You can say that. ठीक है. अभी now what is the question? So what will be the alarming ratio that अगर आपका debtors are means hard debtors, they are not paying it, and in some situation it comes because such आप बोल रहे हैं कंपनी है वो ऐसा बिजनेस फॉलो कर रही है कि जब वो परचेज करने जाती है रॉ मटेरियल तो सारा कैश में पेमेंट कराती है, जब वो सेल करती है तो क्रेडिट पे सेल कर देती है, ऐसा बिजनेस बोल रहे हो? yes. And why would I operate into that business? Why would I want to do that? So अगर उसके रीजंस ये हैं, अगर मैं अपने कस्टमर्स को क्रेडिट देता हूं तो why I'm not taking credit from my supplier? I should, correct? हाँ, ऐसे बिजनेस होते हैं जो दोनों साइड कैश पे खेलते हैं. वो अपने सप्लायर से भी कैश पे करते हैं और कस्टमर को भी कैश पे देते हैं. They don't deal into the credit side of it. And जैसे कि बस मुझे यहाँ भी कैश आया तुरंत यहाँ से भी कैश गया. बट आप तो रिवर्स कर दिया आपने बोला कि मैंने कस्टमर को तो क्रेडिट पे दे दिया, जा भाई तू ले जा पैसा, 6 महीने बाद पेमेंट कर दियो, ठीक है, इट्स ओके. बट जब मेरे को रॉ मटेरियल की बात आ रही है तो मैं पेमेंट कैश में कर रहा हूँ. Whatever we are putting these examples and all that we are creating the raw material and selling it and all that. हाँ, तो ये वाला जो बिजनेस FMCG and all that. But there are companies which do the project business, the consultancy business, which OEMs are there and all. तो उसको जो अपने सप्लायर्स होते हैं उसको क्रेडिट पे पेमेंट करते हैं. Like L&T have EPC contractors they have. And in that case,
there can be delay from their clients, but anyhow they have to pay their to their vendors or from where they are buying the material. दीपक डिले कस्टमर से हो सकता है पेमेंट के लिए, वो इज नॉट व्हाट आई सेड इज रॉन्ग. व्हाट आई एम सेइंग, लेट्स अज्यूम मैं एक कंपनी हूँ, लेट्स अज्यूम आप मेरे कस्टमर हो, लेट्स अज्यूम फजलूर मेरा सप्लायर है, तो मैं फजलूर के पास गया, मैंने फजलूर को कहा कि मुझे ये सर्विसेज चाहिए, ये रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, और फजलूर ने कहा कि ठीक है पेमेंट कैसे करोगे. मैं उसको बोलूंगा यार कि क्रेडिट पीरियड अवेलेबल है, फजलूर कहते हैं हाँ 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है, तो मैं उसको बोलूंगा ठीक है मैं आपको 1 महीने में पेमेंट करता हूँ, डन. तो मैंने क्रेडिट परचेज कर लिया. अब आप मेरे कस्टमर हो, मैंने आपको कहा, आपने कहा कि निशान मुझे 20 दिन का क्रेडिट दे दो, तो मैंने कहा मेक सेंस, क्योंकि मेरे को तो वैसे भी फजलूर को 30 दिन में पेमेंट करनी है, तो मैंने दीपक को 20 दिन का क्रेडिट दे दिया. यू विद मी टिल दिस पॉइंट. अब आप 20 दिन के मेरे पास आया, आपने कहा निशान दिया कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, मेक सेंस. मैंने कहा ठीक है दीपक, अपना पुराना रिलेशनशिप है, कोई बात नहीं, आप कर देना. आई एग्री विद यू. अब इस सिचुएशन में मैं फजलूर को तो मुझे तो पेमेंट करनी ही पड़ेगी, अनलेस फजलूर को मैं रिक्वेस्ट करके और एक्सटेंशन ले लूं. तो ये सिचुएशन की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिचुएशन दूसरी बात कर रहा हूँ जो आपने पहले क्रिएट करी, कि मैंने आपको यानी अपने कस्टमर को तो क्रेडिट दे दिया, बट फजलूर से मैं क्रेडिट ले ही नहीं रहा हूँ, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट क्रेडिट अवेलेबल है. मैं फजलूर को बोलते नहीं तुझे कैश पेमेंट दूंगा मैं अपफ्रंट, बिकॉज आई एम अ कैश रिच कंपनी. आई एम सेइंग ये बिजनेस सेंस के अगेंस्ट है. सो आई एज अ मैनेजमेंट वुड, हाँ कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन है, फजलूर कहता है अगर कैश पेमेंट करोगे तो इमीडिएट डिस्काउंट दूंगा, कुछ मुझे टैक्स में एडवांटेज मिल रहा है, मेरे पास बहुत सारा कैश है, डिमोनेटाइजेशन आ गया, सारा कैश निकालना है मुझे, वो सिचुएशन ऑन एंड ऑफ चलती रहेगी. बट आई एम सेइंग ऐसे स्ट्रैटेजिकली लॉन्ग रन में आई एज अ मैनेजमेंट, बिकॉज आई एम सिटिंग ऑन ह्यूज कैश, आई एम ए कैश रिच कंपनी, मेरे पास कोई डेट नहीं है, हेंस आई स्टार्ट पेइंग everything in cash to my suppliers. On the other side, I कस्टमर से मैं क्रेडिट देना शुरू कर दूं. आप मुझे बताओ ये बिजनेस में इज नॉट मेकिंग अ बिजनेस सेंस. ठीक है, फिर भी अगर थियोरेटिकली अगर लेट्स वी डू दिस इटसेल्फ क्रिएट्स अ रेड फ्लैग, जो हमने पीछे डिस्कस किया था. अगर आपका क्रेडिट पेमेंट पीरियड छोटा है, ठीक है, वीजा विज योर डेटर्स कलेक्शन पीरियड, तो वैसे भी रेड फ्लैग है बिजनेस के लिए. आपका क्रेडिट पेमेंट पीरियड हमेशा एटलीस्ट इक्वल, मैं इक्वल बिलीव नहीं करता, हमेशा उससे बड़ा होना चाहिए वीजा विज योर डेटर्स कलेक्शन पीरियड, फॉर यू टू ऑपरेट एंड यूज अ कंसेप्ट ऑफ योर फाइनेंसिंग फ्रॉम योर क्रेडिटर्स. Deepak, which question? So how to correlate? Can we correlate this aspect with activity ratios? इक्विटी रेशियो, आप डेट इक्विटी रेशियो की बात कर रहे हैं? नहीं, this ratio जो हम पॉजिटिव साइड बोल रहे थे, डेटर्स शुड कम, कैश इनफ्लो शुड कम फर्स्ट, देन गोइंग कैश आउटफ्लो. परचेज एंड करेक्ट, वही किया ना यहाँ पे. सो यहाँ पे मेरा न्यूमरेटर में 1 रुपया है, बट मुझे पता है ये 1 रुपए से कैश इनफ्लो नहीं आने वाला टाइम पे, उसमें से सिर्फ 80% का ही कैश इनफ्लो आने वाला टाइम पे. That I've understood. Can we correlate this aspect with the activity ratio? What we have read, like debtor turnover ratios. डेटर्स टर्नओवर रेशियो और इसका कोई लिंकेज नहीं होगा, क्योंकि डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज गिविंग यू एन एनालिसिस बिटवीन सेल्स एंड डेटर्स कन्वर्जन. The only ratio that we can look at and try and link is the debtors collection period and your creditors payment period. तो अगर आपका करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी से सपोज 1/1 है या 1.5/1 है, और आपका उधर क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड इज मोर देन द डेटर्स पेमेंट पीरियड, देन यस, फ्रॉम अ लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव कंपनी इज ऑन अ ट्रैक. उसके अलावा जो डेटर्स
टर्नओवर रेशियो है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, वो कंपैरिजन करके भी आप कुछ खास अचीव नहीं करोगे, बिकॉज वो अलग टेस्ट कर रहा है, ये अलग चीज टेस्ट कर रहा है. Okay. हेलो सर. हाँ फजलूर. सर ये रेशियो जैसे आपने बताया डेटा क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से पर डिपेंड है. सर इसमें तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी तो है ना. तो वो सब क्वालिटी ऑफ द करंट एसेट अगर में आ गई ना. तो सर अगर उसके डेटा बाद अगर 50% भी रहता है तो हम ये 1:1 उस केस में भी तो सही हो सकता है ना, हाँ, कि तो अगर हमारा मैंने डेटा मैंने 50% मैंने मार्केटेबल. मैंने कब मना किया? सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे डेटस तो मैंने एग्जांपल दिया आपको. अब मान लो आपके करंट एसेट में एफडी रखी हुई है, मार्केटेबल सिक्योरिटी रखी हुई है, आपको पता है इतनी ज्यादा अनसर्टिनिटी है मार्केट्स में कि आपकी एक मार्केटेबल सिक्योरिटी जो 100 रुपए की है, वो कभी 100 रुपए की होती है, कभी 150 रुपए की हो जाती है, कभी 50 रुपए की हो जाती है. तो मैं करंट एसेट पे भरोसा नहीं कर सकता ना ज्यादा. बट अगर आपकी मार्केट में अनसर्टिनिटी नहीं है, आपके पास जो एक मार्केटेबल सिक्योरिटी है वो 100 रुपए की है, तो 100 के आसपास ही ट्रेड होती रहती है. कभी भी आपको बेचना है तो 100 के आसपास ही बिकेगी और आसानी से बिक जाएगी, तो ठीक है, मैं उस पर ज्यादा कंफर्ट क्रिएट कर सकता हूँ. डेटर्स मैंने एग्जाम्पल दिया फजलू. ऐसे ही आपको बाकी करंट एसेट्स की क्वालिटी को भी समझना पड़ेगा. I think the golden and then the important takeaway for at least from today's session for you, for everyone is, yeah, I want to break that myth of saying this again and again कि current ratio के लिए ideal ratio is 2/1. I just want you to ensure कि you get away with it. ठीक है. And कोई भी अगर आपको पूछता है particularly in interviews or any discussion with the management or somebody who's on the financial side, please try and avoid giving those wrong answers. Okay, use this base जो भी हमने डिस्कस किया है, and then you need to define कि वो 2/1 अच्छा है कि 5/1 अच्छा है. 5/1 10/1 की भी कंपनीज होती है जहाँ पे हम ऑपरेट करते हैं, and as a management वो कॉल लिया जाता है कि we want to stay at 10/1 because of the factors जो हमने डिस्कस करे. ठीक है. But there has to be logic which defends your number like 10/1 or 5/1 or 2/1 or 1/1 or 1.5/1. ठीक है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट सेइंग कि ये रेशियो अच्छा है बिकॉज मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता या बुक्स में या आइडियल रेशियो ये है, आई थिंक दैट विल नॉट फ्लाई टू मच. Any question on this ratio? Last time, any question? ये तो येलो में 2 पॉइंट्स लिखे हैं, क्लियर. Talking about the quality of current assets, like 80% we have good quality. तो जो हम buffer लेंगे above 1, तो we will take 20 or the management can decide above that also. I will start with 20 at least, and then I will look at this parameter जो हमने सेकंड पैरामीटर देखा है, ये वाला इम्पैक्ट. Okay. अगर मेरे क्रेडिटर्स ऐसे हैं कि एक दिन का पेमेंट डिले हो गया और मेरे लिए रेपुटेशन या लीगल कॉन्सिक्वेंस क्रिएट कर देंगे, तो शायद मैं 0.20 से भी थोड़ा ऊपर रखूंगा. और वो कितना ऊपर रखूंगा वो डिपेंड करता है अनसर्टेनिटी की. आपका बिजनेस कितना वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है. अगर आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी इकोनॉमी में है जो बहुत वॉलेटाइल है, कभी भी कुछ भी होता रहता है, ऊपर नीचे चलता रहता है. ठीक है. कभी पेमेंट्स बहुत ऊपर नीचे चलती हैं, कभी बिजनेस अच्छा चलता है, कभी इन्वेंट्री ऊपर नीचे हो जाती है, बहुत ज्यादा. आप इस 0.20 को शायद और ऊपर ले जाऊंगा. बट इफ आई एम ऑपरेटिंग एट ए वेरी
very stable sector, from a very stable business, from a stable economy perspective, then I'm okay to look at somewhere 0.20 as well if my creditors are not very hard creditors. पारुल, ये factors को consider करके component बनता है. Okay. And like suppose in case you are a market leader, like suppose we take Reliance, so it can also be possible that it can even take short in current assets. Yeah, that's what we do. उसमें क्या होता है, अगर मैं market dominant leader हूँ, ठीक है, like the name that you took, ठीक है, तो वहां पे जो impact of delay है ना, वो zero हो जाता है. Because I'm a leader, अगर आपको मेरे साथ business करना है, तो मेरे टर्म्स चलेंगे, आपके टर्म्स नहीं चलेंगे. तो मैंने अगर पेमेंट डिले करी, तो आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, ठीक है. तो वहां पे I play on the other side. जो रेशियो है मैं बहुत कम खेलता हूँ उसको. Sometimes we might choose to be at 1/1 also, or 0.5/1 also, because मार्केट में मुझे जरूरत नहीं है आपके साथ बिजनेस करने के लिए, आपको जरूरत है मेरे साथ बिजनेस करने के लिए. That is the way these people operate. तो वहां पे आप जो करंट रेशियो देखोगे वो काफी अलग पिक्चर दिखेगी आपको. Yes, okay. हाँ जी, any question on this? ठीक है, so मैं रिमूव कर रहा हूँ ये. गिवन आपको कोई क्वेश्चन है, आई टेक दैट दिस इज क्लोज्ड. पढ़ लीजिए तीनों पॉइंट. आई थिंक वी डिस्कस दिस नाउ. Short term liabilities within a year. It also not only captures your availability of cash, it also captures your ability to raise cash in short term, ability to raise funds. Okay. Now, next ratio is quick ratio. Okay. What I do, what we generally follow in quick ratio. Quick ratio is equal to current asset minus X divided by current liabilities. This is what we do. X क्या बता रहा हूँ? And what is X? Any current asset which you believe will not, which you believe that you will not be able to convert into cash in short term. Though from an accounting perspective, it's called as current asset. ये वो X है. देख लीजिए, कोई डाउट है तो कुछ. Examples of these is inventory, prepaid rent,
जैसे एग्जांपल्स हैं जो अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से आपके करंट एसेट में फॉल करते हैं, बट ये रियल वर्ल्ड इनको ओनर से लैंडलॉर्ड से पैसा वापस लेना एडवांस रेंट का इज नॉट सो इजी। बहुत टाइम लग जाता है कभी कभी कुछ बिजनेसेस में। तो अगर आपके पास ऐसी आइटम्स हैं, इन्वेंट्री, लेट्स अज्यूम आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ्स करते हैं, अब विंटर सीजन स्टार्ट हो गया स्पेशली द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। नाउ लेट्स अज्यूम अगर आपके पास समर्स की क्लोथ्स हैं, तो अभी नेक्स्ट 6 महीने, नेक्स्ट 4 महीने से पहले नहीं बिकने वाले। nobody will come and purchase summer clothes, correct? So आपको वो इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ेगी फॉर नेक्स्ट सीजन। सिमिलरली आपके पास कुछ दिवाली के क्रैकर्स, आप मैन्युफैक्चरर ऑफ क्रैकर्स, अगर आपके दिवाली के क्रैकर्स हैं, तो अब आपके पास कुछ इन्वेंट्री बची हुई है, सो यू कांट सेल दिस, करेक्ट? वो नेक्स्ट ईयर नहीं सेल होने वाला। सो वो इन्वेंट्री इज नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इनटू कैश and you need to hold it for a long period of time, which is what exactly which we are discussing as X. ये तरह की इन्वेंट्रीज अगर हैं तो मैं उसको करंट एसेट से नॉक ऑफ कर देता हूँ, because that's not going to convert into cash very soon. इस रेशियो को क्विक रेशियो, this is much more refined version of a current ratio. We generally look at this vis-a-vis an ordinary current ratio. बाकी एनालिसिस सेम है जो मैंने ऊपर आपको बताया। Any questions, doubt on this? No question? Any question on quick ratio? This is also called as asset test ratio. Last time, any questions on this ratio? ठीक है। Next is a cash ratio. This is much more हेलो narrowed out. हाँ, फजलू। सर, दोनों रेशियो का तो सेम कॉन्सेप्ट है ही, तो फिर क्विक रेशियो का यूज क्यों किया जाएगा? ये x माइनस करने के लिए। जैसे आपने कहा कि वो 50% अगर डेटा को अगर मेरा ये है, तो 50% मुझे मार्केटेबल सिक्योरिटीज पर डिपेंड करना पड़ेगा, तो फिर इस क्विक रेशियो का यूज क्यों किया जाएगा? मैंने नहीं कहा ऐसा कि 50% है तो मुझे मार्केटेबल पर डिपेंड करना पड़ेगा, या आपने इसको शायद ऐसा बोला है। मैंने नहीं बोला ऐसा। मैंने आपको ये बोला हाँ हाँ। कि मेरे करंट एसेट में ऐसे कुछ करंट एसेट होते हैं जो कैश जनरेट नहीं करते, उसको मैं हटा के न्यूमरेटर में देख रहा हूँ, तो वो क्विक रेशियो बन जाता है। तो उस पर्सपेक्टिव से तो क्विक रेशियो ये है 1:1। हाँ, तो मैंने बोला ना कि क्विक रेशियो इज व्हाट वी जनरली लुक एट। तो क्विक रेशियो ऐसे करंट एसेट जो बैलेंस शीट में करंट एसेट के कैटेगरी में बैठे हुए हैं बट वो करंट एसेट का काम नहीं करते, उसको हटा दिया। मान लो आपके पास कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी है जो बिकती नहीं है, अगर आप बेचना चाहो तो बिकेगी नहीं, उसको हटा दो करंट एसेट से, क्विक रेशियो के कॉन्सेप्ट में। इसलिए मैंने इसको x लिखा ना, और x लिख के क्या डिफाइन किया। अगर आप बुक्स में देखोगे ये ऐसे नहीं मिलेगा आपको। बुक्स में दो रेशियो दे रखे, दो माइनस, इन्वेंट्री माइनस करने को बोल देता है बस वो। अगर आप ये देखोगे यहाँ पे स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये माइनस कर देता है, बट गलत है ना। इसके अलावा भी रियल वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे अदर करंट एसेट भी होते हैं जो माइनस करते हैं, तो इसलिए मैंने आपको एक एक्स से फॉर्म में समझाया।
कोई डाउट फजलूर इसमें? नहीं सर। किसी और को कोई डाउट बिफोर आई मूव टू कैश रेशियो? Next is cash ratio. So cash ratio is much more narrowed version of the current ratio. उसने क्या किया, न्यूमरेटर में सिर्फ वो ही करंट एसेट जो कैश है या कैश इक्विवेलेंट है, यानी डेटर्स हटा दिया, इन्वेंट्री हटा दिया, वो सब हटा दिया, सिर्फ वो ही ले रहा है जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, सो रेशियो के फॉर्मूले में कोई डाउट है तो बताइए। आई विल डायरेक्टली जंप टू द फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ दिस रादर देन, बिकॉज़ बाकी सब सेम ही है फॉर्मूले का कंस्ट्रक्ट। फिर पूछना है किसी को फॉर्मूले कंस्ट्रक्ट बिफोर आई गो टू द फॉरेंसिक पार्ट ऑफ इट। ओके, नाउ व्हाट वी डू, जैसे मैंने आपको बताया करंट लायबिलिटी में लेट्स अज्यूम आपके 0.20 क्रेडिटर्स हार्ड क्रेडिटर्स है, यानी आपका 1 रुपए की करंट लायबिलिटी में 20 पैसे के करंट क्रेडिटर्स ऐसे हैं जो एक दिन का डिले हुआ तो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट क्रिएट कर देंगे। सो व्हाट आई विल ट्राई एंड डू फॉर सच क्रेडिटर्स, आई विल ट्राई एंड कीप माय कैश रेशियो एटलीस्ट टू दैट एक्सटेंट कि अगर बाकी कुछ प्रॉब्लम हो भी गया, मेरे डेटर्स अच्छे डेटर्स में भी कुछ अनसर्टेनिटी आ गई मेरे बिजनेस में, कुछ भी ऐसा हुआ, ठीक है, तो एटलीस्ट लेट मी होल्ड एटलीस्ट कैश और कैश इक्विवेलेंट in that range that should be good enough at least not to pay all creditors but at least to pay those creditors or those bunch of creditors who are very hard to manage। उतना तो मैं एटलीस्ट कैश उनके लिए रख लूंगा, बाकी लोगों को मैं अपने बाकी करंट एसेट के थ्रू मैनेज कर सकता हूँ। दिस इज व्हाट वी डू फॉर दिस कैश रेशियो। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? Any questions on this? Can we say, Yeah, Pablo. yeah, can we say that like instead of taking hard creditors, you can also go for like weak current assets Sorry? for keeping current cash ratio? Like we are looking, suggesting we can look at the hard creditors. So I'm asking like if we can also decide by having a look at the weak current assets so that we can keep them नहीं समझ आया क्या बोल रहे हो? bad. mm, जो हमारे बैड डेट्स हो सकते हैं इन करंट असेट्स, उसका इक्विवेलेंट हम रख सकते हैं कैश रेशियो। उसका इक्विवेलेंट रख सकते हैं, उससे क्या अचीव होगा? What were you saying about this hard creditors? Like if it is मैं तो रिवर्स point, बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ आपका करंट लायबिलिटी लेट्स अज्यूम 1 है, ठीक है, एंड आउट ऑफ दिस 0.20 इज हार्ड क्रेडिटर्स, HC लिख रहा हूँ। तो आपको न्यूमरेटर में करंट एसेट में मैं अगर बोलूं 1 रुपए का डेटर्स है
₹1 का डेटर बोलूं तो इतना मुझे कंफर्ट नहीं आएगा, दो माई रेशियो विल टर्न आउट टू बी 1/1 या लेट्स से 1.5/1। मैं बोल रहा हूँ मैं एटलीस्ट इस 1.5 में एटलीस्ट 0.20 का कैश रखना चाहूंगा, जिससे कि जो मेरे डेटर्स हैं अगर वो उनको भी कुछ हो जाए, अच्छे डेटर्स है उनको भी कुछ ऊपर नीचे प्रॉब्लम हो जाए, तो मेरा ये जो 20 पैसे का कैश है दैट इज गुड इनफ टू पे माई हार्ड क्रेडिटर्स। Okay. I was looking at the reverse side, like, हाँ but the वो cash is रिवर्स already तो, हाँ रिवर्स तो वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, बिकॉज आप बोलो जितने बेटर है उतना कैश रख लो, तो फिर बिजनेस कैसे चलेगा? नहीं, understood. हाँ जी, any question before I close this? मजदूर कुछ पूछ रहे हो? हाँ यस सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जितना हमारा क्रेडिट हार्ड होगा उतना हमारा जो रेशो होगा वो क्विक रेशियो या फिर कैश रेशियो की तरफ मूव करेगा। Yeah. क्योंकि जितना ज्यादा हार्ड होगा वो डेटा और प्लस स्टॉक सपर तो वो डिपेंड नहीं रहेगा। करेक्ट। क्लियर सर, ये पूछना है। और मैनेजमेंट जो है आपके क्रेडिटर्स या सप्लायर्स को चूज करने के टाइम पे ये सब कंसिडरेशन करते हैं कि कितना हार्ड क्रेडिटर, अगर हार्ड क्रेडिटर जनरली उससे बिजनेस कम करना पसंद करती। ठीक है, ये देख लीजिए प्रॉब्लम विद कैश लिमिटेशंस है इस रेशियो की। I don't think anything that we not discussed broadly जो हम डिस्क्रिप्टिव सेंस में है। This money could be turned to shareholders, but आप कैश में ब्लॉक कर रहे हो, so yes, that's a cost that you bear। ठीक है, और ideally company should not maintain too much of cash। That's why I told you कि अगर मेरे क्रेडिटर्स ₹1 है, maintaining ₹1 cash doesn't make sense। उसमें जो मेरे हार्ड क्रेडिटर्स है एटलीस्ट उसको मैं एक पॉइंट बना सकता हूँ तो डिसाइड, अच्छा इसके आसपास का कैश। मैं ये नहीं बोल रहा अगर 0.20 करंट लायबिलिटी है, 0.20 हार्ड क्रेडिटर, जो पूरा का पूरा 0.20 कैश रख लो। एमिट से ओके ठीक है 0.20 मैं इतना तो कैश रख रहा हूँ, एटलीस्ट उनको मैनेज तो कर सकूँ कुछ टाइम के लिए, तो वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। बट दिस विल गिव मी सम सेंस टू हैव एटलीस्ट सम पोर्शन ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो ब्रेकअप डिसाइड होता है करंट एसेट में। ठीक है, सो yeah, so this completes your liquidity ratios. Any question in liquidity ratio? We're done with the liquidity ratios as well. Last time, any question, guys, that will be close. Ready? In case no, tomorrow we'll start with solvency ratios. Okay. Nishant, I had a word with. Sorry. Go ahead, sir. I had a word with Alok, and I think you had a discussion with Alok and Damini on the topic to rebrush the accounting part, what KPMG did. How you are? Sorry. I have not received anything. What I had a last conversation is I told them to speak to you and your batch and get that closed, whatever is uske baad, day before yesterday I had a call with Damini and she has told you and you can discuss with she told me that you can discuss with Nishant and how you are planning for that. ठीक है, अगर कल डे बिफोर यस्टरडे ही हुई है तो प्रॉब्ली आज या कल में I will get, so then we can connect and then
टेक इट फॉरवर्ड जो भी एग्रीमेंट हुआ है. अभी मुझे नहीं है. If you would have sent me emails, I didn't get a chance to look at email during the weekdays. I don't look at mails in weekdays, so I will look at those today also. So अगर मुझे कुछ आया है तो मैं आपको कल बता दूंगा, नहीं तो let me get information from either Alok or Damni and then we can take it forward from there. तब तक हमारा वैसे भी रेशियो तो चल ही रहा है. अभी रेशियो ये तो है नहीं कि हमारा खत्म हो गया. Even you have to look at any other topics. जब रेशियो खत्म हो जाएगा तभी वो टॉपिक देखेंगे. So ठीक है, don't worry. अगर move the कुछ Yeah. That they will attention. See if you have any. Hazar. हाँ तो मैं अभी भी चैनल नहीं उसके लिए think that what I अगर वो मतलब just to this yeah tell जिसमें नहीं तो बोला मैंने यूके. Now if so I'm just because I'm not checked my emails at least till yesterday night. So अगर वो communication आ गया है तो we'll change our strategy and जो पुराना brush up जो भी pieces agree हुए वो भी करा दूंगा. I'm not denying that. I'm just telling you कि अगर वो brush up भी करना है तो रेशियो तो कंप्लीट करें फिर पीछे जाए ना. करेक्ट? या यू वांट कि अभी रेशियो को रोक के पीछे जाए no. कम बैक टू रेशियो. I'm not saying anything. I'm saying कि what is your plan if you have already. I'm just mentioning you what I had a discussion with Alok as well as Damni. And हाँ तो and after that how you are planning for that. You're saying that we will complete the ratio and after that we will go and have no issue because the correlation you know better than me. Response is I have not received any communication yet to the best of my knowledge provided subject to मैंने भी email check नहीं करें. So मुझे आप एक दो दिन का टाइम, अगर दामनी से आपकी कल परसों ही बात हुई है so this possibility या तो उसने मुझे email भेजा हो या मुझे अब आज बात करेगी because generally on the weekend is what she interacts with me or at a length. weekdays में जैसे प्लान करना. ठीक है? I'm not saying that you should stop the ratio and we can brush up the first and all that. It's you're the best judge for that. उसके बाद what I think is the best approach. What are the what could be the plan, and then let's agree on what you guys everybody believes is the right plan, and then जो plan हम agree करेंगे मैं वो execute. I will not try and discuss and agree a plan in a silo. I don't believe in that. So I will come with a plan, and then once you guys agree, then we'll run with that plan. जब go ahead the communication job
बोल रहे हो आपका और उनका क्लोज? Karan is there because there's a videos जब recorded videos का difference बहुत रहता है. अभी last week का I don't know we have received it or not. What is that? What is the difference? I don't know what do you mean. No, difference in the sense that today you're taught this aspect. We'll get it on Monday, so I will not be able to ask you on tomorrow. That's what we have requested that. Oh, acha. Immediately it should be. Okay. Video uploads. Understood. Honestly, I would not be able to. So I don't know. Yes. That's why anybody, Karan or Damni is there on this call. I don't think वो हैं. I request. Available नहीं था. तो जिसकी वजह से सारा सिचुएशन क्रिएट हो रही है. ठीक है, वीडियो अपलोड का probably we need to speak to Karan or Damni. So I can't see them on this at least. वो डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. Anything else? No, thank you for that. ठीक है. In that case we'll close this and then we'll start with solvency tomorrow. चलिए, thanks, bye.